ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमने बात शुरू की थी कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इन मशीन लर्निंग, किस तरह से हमें हेल्प करेगा। एंड वी वेंट बैक टू द बेसिक डेफिनेशन कि बेसिकली मशीन लर्निंग में हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं एफ, जो क्लासिफाई कर सकता है अपने आप को, दैट शुड क्लासिफाई बेसिकली द डाटा करेक्टली। और उसका फ़ायदा क्या है, सो दैट के जो अनसीन टेस्ट डाटा पॉइंट्स उसको फिर मिलेंगे, उनके ऊपर भी वो वैसे ही काम करे, प्रॉपर्ली क्लासिफाई कर सके। ठीक है, सो फोकस इज ऑन ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं ऑप्टिमाइजेशन के रिस्पेक्ट से ही चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस वाज द मशीन लर्निंग गोल। और फिर हमने कहा ठीक है, सो देयर इज़ अ फंक्शन, ओके नो प्रॉब्लम। इस फंक्शन को हम कोई डाटा प्रोवाइड करेंगे और वी और डाटा जो है वो वेक्टर में, मैट्रिसेस में या मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जांपल रिग्रेशन में हमने वेक्टर फॉर्म में डाटा प्रोवाइड किया, और अगर पिक्चर्स हैं आपके पास तो वो आपके पास जो एक मैट्रिक्स फॉर्म में डाटा आएगा। और फिर 100 या 200 पिक्चर्स हैं तो इट बिकम्स लाइक अ टेंसर, और आपके पास एक आउटपुट आएगी y। सो व्हाट वी सेड कि अच्छा ये जो फंक्शन f है, ये दिस इज समथिंग जिसको हमें फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन क्या है। सिंपलेस्ट हमने स्टार्ट किया बाय सेइंग कि जो सिंपलेस्ट लीनियर फंक्शन है दैट मे बी अ सॉर्ट ऑफ अ मैट्रिक्स, सिंपल मैट्रिक्स हो सकता है। और ये सिंपल मैट्रिक्स जो है, इसकी जो एंट्रीज होंगी दे शुड बी सम काइंड ऑफ should be learned from the data. Allow me to directly write जो एक एग्जाम्पल मैं भी यहाँ लिख रहा हूँ। इंशाल्लाह ये जब आपके सामने आएगी तो you will be able to get an idea. Let me see if I have it here. Right. अभी एक टारगेट मैं यहाँ पे अभी मेंशन कर देता हूँ आपको। अभी टारगेट हमारा है, हम कोशिश करेंगे कि अगर मेरे पास लीस्ट स्क्वायर्स की प्रॉब्लम अगर मैं लेके आता हूँ, लीस्ट स्क्वायर्स, और मेरे पास अगर डाटा सेट्स हैं लाइक दिस वन कि मेरे पास एक्स आई और वाई आई, ये दो डाटा सेट्स हैं, और ये दो डाटा सेट्स अगर मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है, दे कैन बी 1 2 3 4 5, ये कोई भी आपके पास डाटा 6 7 8.9 9 10.11 10.1 for example. So this may be some kind of x and there will be some kind of y, और ये हमारे पास कुछ डाटा सेट्स आ गए थे। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, we will be finding some kind of a y hat, और ये क्या होना चाहिए, this will be like omega naught plus omega 1 x. So इसकी जो एक इक्वेशन फाइनली हमारे पास सामने आती है इस तरह की सिस्टम्स की, मैं सिर्फ ये शो करना चाहूँगा कि ये किस तरह से बनेगी। सो आई हैव ए वन इक्वेशन जो हम ड्राइव करेंगे by the end of this lecture, that will be something like summation yi divided by n minus w1 hat summation xi upon n। और एक और एग्ज्यूम करें कि हमारे पास जो वैल्यू आई है, दिस इज ओमेगा नॉट हेड की है ऑप्टिमाइजेशन, this will be the best values, summation yi xi minus summation yi। इसको याद करने की जरूरत, मैं एक इक्वेशन लिख के बताना चाह रहा हूँ। summation xi yi divided by n। okay, can you write it like this, omega hat omega 1
into some form of इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, इस चीज को हम मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे. This is a word. This can be one target for us. Any idea इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं इस फॉर्म में. So having omega 1, let's go back to the main. यहाँ से जो मैं चीज बताना चाह रहा हूँ, I should simply ये हम डेरिवेशन करेंगे तो उसके एंड में ही फिजिबल होगा. Go back to the basic. Having this data set, so this will be इसके अंदर की जो एंट्रीज हैं, कमिंग बैक हियर, जो बाद में कंटिन्यू करते हैं, जो ए मैट्रिक्स है बेसिकली, दीज आर द एंट्रीज आर द वेट्स, और ये आपकी डाटा सेट से ही बनती हैं. एंड द एंट्रीज विल बी समथिंग लाइक दिस. आई फॉरगॉट अबाउट एग्जैक्टली कि इसकी क्या लोकेशन है, बट देयर विल बी समथिंग i इक्वल्स टू 1 to n. डेरिवेशन के आखिर में ये सब चीजें आ जाएंगी. एंड on one location there will be summation xi 1 to n, and the third point will be summation of yi xi, and I will be from 1 to n, or the fourth point that will be summation xi square I equals to 1 to n. So what I mean is मैं ये show करना चाह रहा हूँ कि ये जो A की मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं, these entries, they are the weights that we will learn. Okay. And then we saw कि अच्छा ये simplest form जो है वो जो simplest form हमारे पास है वो that will be a kind of a linear function, और अगर उसके अंदर हम use करेंगे some kind of Weiss factors भी हो सकते हैं इसके अंदर. It is similar to y equals to mx plus c जिस तरह से वहाँ पे Weiss value होती थी, and this is the slope. Similar to this one, हम ये f function जो है उसको सीखते हैं. But practically real world situation might be different. आपके पास कोई linear नहीं होगा, तो in that case we need some better or some non-linear functions. So non-linear functions में ये जो हमारे पास एक straight line आती है linear functions के लिए, that will be changed to some kind of a step size, और उसका सबसे पहला simplest जो है वो this is called S shaped curves. S shaped curves में हमने देखा कि there are few functions like sigmoidal function है. This is a good one, और इसको हमने plot भी करके देखा. इससे फायदा ये है कि this may help us to decide based on the data. आपके पास input data हो तो उस input data को वो positive, वो -1 या +1, 0 या 1, ये इसको categorize कर सकता है. So we can get इस function से जो आपके पास output आएगी वो decisive होगी, ठीक है. और इसीलिए चूंकि ये डिसाइसिव है और आउटपुट पे है, इसलिए इस तरह के फंक्शंस को हम कहते हैं लॉजिस्टिक फंक्शंस. सो ओवरऑल होता है क्या है न्यूरल नेटवर्क्स या डीप न्यूरल नेटवर्क्स में, we first solve one linear problem and then we make a decision on it that makes it a non-linear decision. इसी तरह का होता है कि आपने कोई उसको डिसाइड करते हैं कि ओके दिस बिलोंग्स टू सर्टेन कैटेगरी, ठीक है. अलाउ मी टू राइट अ फ्यू. अगर ये हमारे पास कुछ data है जो कि exist करता है, and this may be, let's say, the size, and this may be the weights, और मैं बात कर रहा हूँ, let's say I'm talking about the coins. तो coins अगर देखें तो हो सकता है कि जो let's say कि 50 पैसा के जो coin हैं they are basically here, और जो आपके पास है 100 let's say पैसा जो है वो they may be here, and we may have some let's say 75 पैसा जो है वो आपके पास यहाँ होगा. So after some time जो है हमें उसका अंदाजा भी हो जाएगा. So anyway, we need to make some kind of a
डिसीजन. ओके, सो ये थोड़ी सी इस चीज को, एंड देन इट गोज लाइक दिस. ये फिर उसके बाद आपके सिग्मोइडल फंक्शन अप्लाई होगा, एंड देन वी हैव अनदर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट्स से. So logistic functions या shape function जो हैं, they help us a lot in making decision. इसका फायदा क्या है? Rectilinear हमने देखा, this was another important function. Rectilinear का फायदा है कि ये एक तरफ आपके पास जो है या तो as it is उसकी वैल्यू x फॉरवर्ड करेगा या फिर 0 करेगा. ठीक है, so this is the mathematical function that we saw. इसको हम मजीद देखेंगे. And then सिग्मोइडल फंक्शंस की जो अच्छी प्रॉपर्टी है दैट इज कि वो डिफरेंशिएबल होते हैं. डिफरेंशिएबल होने से हमें ऑप्टिमाइजेशन में बहुत फायदा होगा. एंड देन वी सॉ द डेरिवेटिव. और अच्छा, सो व्हाई वी आर यूजिंग दिस, इसकी वजह क्या है कि हम ये एक्टिवेशन फंक्शंस यूज कर रहे हैं. इसकी वजह ये है, मेन वजह वी डिस्कस के, एक तो ये कि फंक्शन बाउंडेड है, यानी कि दे आर नॉट इनफाइनाइट. ठीक है, सो आपके पास कभी भी एक्सप्लोर नहीं होगा. सो दिस विल प्रिवेंट exploding or saturating solutions. अगर सही तरह से हम करेंगे तो हमारे पास रीजनेबल प्रॉपर आंसर्स आएंगे, एक्सप्लोर नहीं करेगा ना सैचुरेट करेगा. डिफरेंशियल इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन ऑप्टिमाइजेशन जो है, हम किसी भी ग्राफ का उसका जो मैक्सिमा है या मिनिमा है, इन मिनिमा और द मैक्सिमा, ये दोनों की दोनों वैल्यूज आप अचीव करते हैं जब आप डिफरेंशिएट, इसका जो स्लोप है दोनों पॉइंट्स के ऊपर वो 0 होता है. ठीक है, सो इट शुड बी डिफरेंशिएबल सो दैट कि वी आर एबल टू लोकेट द मिनिमा एंड मैक्सिमा. तीसरी इसकी अच्छी बात ये है कि रियल फंक्शंस हैं, they will take the real inputs, they will provide the real outputs, and that's why they can take and meaningfully the data from real world, and they can provide the data to real world. ठीक है, सही. यहाँ तक किसी किस्म का कोई सवाल? So if there is no question, so this allows me to go. और मैं आज थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बता देता हूँ आपको कि जो even the deep neural networks, they have been actually, they have evolved into a major force of in machine learning. और basically ये सब हुआ किस तरह से है, and they are heavily based on the linear algebra, because हम सिर्फ अपने मर्जी की चीजें ले रहे हैं, तो इसलिए I was trying to emphasize on this probability and statistics. or and also we have the third one is the optimization. ठीक है, ये तीनों fields के ऊपर based on these, now what happens is कि the structure of I should say the learning network is or function has become more more powerful and resilient. ठीक है, बहुत powerful हो चुका है. And plus there is another very interesting thing कि and it is easy to adapt
to new applications. इसलिए we are having a boom right now. हर चीज़ आप machine learning के point of view से discuss करते हैं. So इसकी जो अब essential, what are the essential pieces of the learning structure? इसकी जो essential pieces हैं, what are they? कि हमारे पास जो learning function है f, x और v, ये हमारे पास बन जाए. Here x are basically the आप इसको x कह लें या फिर हम इसको हम मेरे ख्याल से conventionally इसको हमने w कहा था. So let's call them w and v. और so w are our weights. ठीक है, w are the weights that actually capture the information from the training data. और training data हमारे पास है v. So basically what we are doing here is कि हमारे पास हम this जो output आपके पास function बनेगा, this output function will be taking data और ये weights को करेगा. अच्छा, ये achieve कैसे करेगा deep learning में? इसके essential parts जो हैं, we will do this now. Okay, yeah. So the very important steps in creating the function f are now the very important are सबसे पहले तो एक the key operation is, सबसे पहला जो key operation है, it is basically we the composition of f. For example, f can be for example, I mentioned that we will have some जो भी data आपके पास आ रहा है, it will come to the first layer of neurons. उसके बाद it may go to the second layer. ठीक है, neurons data process होगा, it will be processed here, और उसके बाद फिर अगली layers पे जाएगा, and then we will have the final layer. और हर जगह आपके पास they will be interconnected कि कौन किस तरह से कर रहा है. So this f is the overall function. ये f जो है ये basically आपका overall function होगा f. ठीक है, and this will be composed of smaller f's. यानी हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास f1 है, फिर second f2 है, फिर ये आपके पास f3 है. So every layer will have its own complete functionality. So this will be f will be basically like for example f3 होगा, फिर उस f3 is applied on f2 और f2 जो है वो f1 के ऊपर है, और f1 basically apply हो रहा है आपके पास input data के साथ. ठीक है, please tell me आपको ये बात are you able to grasp this idea that this f, this complete f is basically a function, and this function is taking some data from here, and within this is the data, let's say input data for this function. ठीक है, और ये जो आपके पास f2 है, f2 के लिए this is the input data for this function f2, and for f1 here inside, I should change the color now, और ये जो f1 है, f1 के लिए जो input data है
और जो उसके पैरामीटर जो उसने ऑप्टिमाइज कर रहे हैं वो ये रहा, ये इसका इनपुट डाटा है. सो इन अ सीक्वेंस इट इज गोइंग. सो आप जब न्यूरल नेटवर्क्स के हवाले से सोचते हैं तो पहली द की ऑपरेशन हियर इज, पहली चीज ये है कि आपको इस तरह से we have to think and make a composition of the functions in this form. ठीक है? So this is the first thing. The second thing is any question till now? The second thing is the key role, or the key role is about let me check if there is any questions till now. Recording हो रही है इसकी. Okay. And the key role is and the key role is here. Okay. And the key role is about the chain rule. Chain rule for the derivatives. For the derivatives of the function. ठीक है, ये derivatives हमें help करेंगे to arrive to the, अब जैसे sigmoidal में हम देखा था, they will help us to go and find out the derivatives minimum and maximum points. ठीक है, and then we have the third thing is the key algorithm. And the key algorithm is basically the stochastic gradient descent. That helps to find the best weights. Okay, and the best weights are, for example, for W's. And then comes the fourth, the key subroutine. And this is about the back propagation to execute the chain rule. Okay. Okay, इसके बाद हम derivation complete करेंगे. Who is this? Can you clean this? सर ये मैंने लेफ्ट हैंड में मोबाइल पकड़ा था तो ये गलती से लग गया, ये हट रहा नहीं है. Okay. Okay. So please be careful. अच्छा, और फिर मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ, these are the last, and the finally thing is, the fifth one is key nonlinearity. Key nonlinearity is about, for example, rectilinear unit functions. They help us to, for example, find about ये जो activation function में हम use करेंगे, RAM functions basically. This is the structure that I'm telling you. ये है हमारे पास ये जो अभी हमने थोड़ा सा these are basically the deep neural network steps. ठीक है? This is about the deep neural network steps. Okay. Okay. Right?
So deep neural networks, they actually actually on every stage they are actually using some type of probability statistics or optimization. So it's a mixed algorithm that helps a machine to learn. Or the learning is quite focused on one thing. ये फंक्शन को फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, f, राइट? और उसको हम करते इस तरह से, the work is divided like this कि हम पहले एक इसका स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं. That's why we use the learning structure. So the word that we are using is here, जो सपोर्ट करता है कि हम लर्निंग स्ट्रक्चर जो है उसको डिसाइड करते हैं. सो वी विल सी कि हम जो है ना सिंगल लेयर, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू शो यू इन मैटलैब एज वेल कि एक सिंगल लेयर जो है न्यूरल नेटवर्क उसको बनाएंगे और फिर देखेंगे कि ये कहाँ पर फेल हो जाता है सॉल्व करने प्रॉब्लम में. उसके बाद फिर हम एक और 2 लेयर का या हिडन लेयर के साथ एक और बनाएंगे न्यूरल नेटवर्क, जस्ट टू शो यू कि फिर वो हाउ कैन इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम जहाँ पे ये पिछला फेल हुआ. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपको जो कंपोजिशन ऑफ एफ है, it is very important. It's like you are defining the structure of your the setup, the learning function के वो कैसे काम करेगा. And it is basically a combination of इसको अगर आप देखें तो you will see some kind of a linear algebra inside. और इस linear algebra की एक problem आप लोग already solve कर चुके हैं, which is about this thing. इसको आप पहले solve कर चुके हैं. Anyone can tell me मैं कौन सी चीज को रेफर कर रहा हूँ कि हम ये वाली प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं एक लीनियर को. it's like small regression was similar to that. ठीक है, जिसके अंदर आप इसको you try to solve ax equals to b. So when you are solving ax equals to b, you are solving this first function problem, for example. अच्छा, फिर neural network the second role इसमें play करता है, that is about the chain rule for the derivatives. Here the calculus comes into play. आज अभी मैं इस calculus की कुछ हम derivations करेंगे. Second part, key algorithm is the stochastic gradient algorithm. Last week you did this in the lab as well. उसके बाद key subroutine. So today what I'm talking about, आज मैं आपको कुछ थोड़ा सा key role number 2 और जो 3 है इसकी हम कुछ calculations करेंगे. And then next time, maybe in some time, we will do the back propagation others. ठीक है? So stochastic gradient and subroutine is important. Back propagation is important. Back propagation is basically how we actually learn and find the best ways. Back propagation का क्या मतलब है? Anyone can tell me? आपने पहले अगर सुना? Basically we are trying to find सारे की सारी जो चीज है वो इसी में ही on this picture is evident. इसी की कुछ ना कुछ वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर रहे होंगे. ठीक है, इसका f क्या है, इंडिविजुअल f k क्या होगा, हम वो फाइंड आउट कर रहे होंगे, या आपका इंडिविजुअल जो वेट्स आए हैं वो क्या होंगे. अब ये दिस इज अ प्रॉब्लम दैट वी नीड टू सॉल्व. अब इसको सॉल्व करने के लिए देयर इज वन वे कि आप यहाँ से ग्रेजुअली सॉल्व करें, पहले इसको सॉल्व करें, फिर इसको सॉल्व करें, सेकंड लेयर को, थर्ड लेयर को, उसके बाद आउटपुट को. So this is forward propagation. Back propagation may be okay. What do I need? मतलब क्या चीज को आप classify करना, and then you start solving it. It's like we have 2 ways to solve the problem. एक forward way होगा, forward propagation होगी, और एक आपके पास होगी backward propagation algorithm जो बनेगा. This is what is mentioned here in key subroutine. कि जो कि आपके पास इसको इंशाल्लाह ये जो चीज है आपको ये जो कि किस तरह से चेन रूल को सॉल्व कर रही है ये चीज वो भी क्लियर हो जाएगी. बट फॉर द टाइम बिंग द किंग सब रूटीन इज द बैक प्रोपगेशन. और नॉन लीनियरिटी हमारे पास जो है इट वाज द लीनियर फंक्शन जिसको हमने ट्रांसफॉर्म किया था एक सिग्मोइडल फंक्शन के अंदर, एंड देन इट वाज ट्रांसफर्ड टू अ रेक्टिलिनियर फंक्शन. ओके, now I will continue on the optimization case.
So back to optimization. Okay. So now we back to the basic or back to basic optimization, so that कि हम इसकी calculations करें और जो जो functions हैं वहाँ तक हम पहुँच जाएं derive करके. And when you are implementing, you know what you are implementing. So back to the basics. What is the goal of optimization is? Goal of optimization is to basically minimize, ठीक है, minimize or minimize a function. अब मैं function को introduce करा, मैंने जो इतनी this f is not a simple f. अब आप इस f को connect करें कि I am talking about a learning function, ठीक है, this is a big f. और इसके पास बहुत ढेर सारे मैंने it has many variables and very important variables. These are not just data points, ठीक है, ये इसके बहुत important variables हैं और इसमें एक x जो है वो it can be a vector, ठीक है. This can be a scalar value, this can be a vector value. So x of इस चीज को ध्यान में रखें. This may be a picture, for example. Each x1 may represent a complete picture, for example, ठीक है. So the most important what is the most important equation of calculus? The most important equation of the calculus is कोई बता सकता है क्या है ये सबसे important calculus की? It is when the derivative is equals to 0 and it happens. ये कब होता है? कौन बता सकता है कि ये कब होगा? Derivative equals to 0. At the minimum point, ठीक है. I'm talking about कि अगर हमारे पास ये फंक्शन है, एरर फंक्शन अगर मैं इस तरह से बनाता हूँ, this is some kind of error function, तो उसका जो ये मिनिमम पॉइंट होगा, this may be a function. For example, हमने error function बनाया and y equals to w1x. So this at this point the error will be 0 और ये वैल्यू मुझे फिर चाहिए होगी उसकी w1 की. So जैसे हमने कहा कि हमारे पास n variables हैं. So for n variables, sorry for using this big, ये constants के लिए हम use करते हैं. Small n means variable. For n variables f has to n partial derivatives. ठीक है, आज हमने theoretically चीजों को किया. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसकी हम कैलकुलेशंस कर लेंगे. सो जो n partial derivatives हैं, they will be like this. okay, और इसकी एक एग्जांपल हम, allow me to do this small thing. ठीक है. सो ये हमारे पास n partial derivatives होंगे इसके, और and keep in mind that the x may be constrained. Constraints किस तरह के हो सकते हैं? For example, x जो है it should be possible. अगर कोई प्राइस है तो आप सेलिंग प्राइस वगैरह है तो x should be positive. या फिर और कोई आपके पास जो this may be कि x should satisfy satisfy this equation. So इस तरीके से हम जो है इसको सॉल्व करते हैं, right? Now I will introduce you to one thing. अभी तक okay. Now tell me one thing here. अगर मैं
where is this example? So a simple example is good right now. For example, if let's say हमारे पास एक function है g of w which is equals to 5 minus omega minus 10 square. तो इसका जो differential है, this will be with respect to w, it will be 0 minus 2 w 10, and then it will be minus 2 plus 20 omega, right? सही लिखा मैंने? नहीं, it is basically so the answer will be 2w minus plus 20, and to find minimum, so equate this by to 0. This implies that कि minus 2 omega plus 20 जो है ये 0 होगा, तो फिर आपके पास ओमेगा की क्या वैल्यू आ जाएगी? It will be 10. और इसको अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ, इसको प्लॉट करके देखिएगा कि आपके पास, so this is the minimum value कि जिसके ऊपर आपके पास ये फंक्शन जो है मिनिमम होगा, right? Okay, we will continue from here. Either minima होगा या maxima होगा, we will see. This is basically the maxima. This is either minima or maxima. आप इसको अब हमें कैसे पता चलेगा? इसको हम प्लॉट करके देख सकते हैं इस फंक्शन को, दिस फंक्शन, इस फंक्शन को आप प्लॉट कीजिए, यहाँ पर रखिएगा, इसको करके देखिएगा और इसको ओमेगा, एंड देन ट्राई टू प्लॉट. एज्यूम करें कुछ वैल्यूज w की, लेट्स से 1 2 3, बल्कि मैं इसको आपको 5 माइनस w माइनस, इसको मैं वहाँ पे मैटलैब में आपको प्लॉट भी करके दिखा सकता हूँ, बट वी आर लेफ्ट विद स्मॉल अमाउंट. सो ट्राई दिस थिंग w, और उसके बाद इसको प्लॉट कीजिएगा g of w को, ठीक है? So this is the task. Next time मुझे दिखाइएगा कि आपके पास ये क्या आता है. What is the plot of if you plot 5 minus w minus 10? ठीक है? इसको प्लॉट कीजिएगा, and then we will continue from here next time. कोई सवाल किसी किस्म का? Let me take the snap of the attendance. Okay, so I have taken the attendance as well. कोई सवाल है तो kindly message कर दीजिएगा. Thank you very much.